Organic nitrates. They are used in the treatment of angina. Example of nitrates: nitroglycerine, also known as glyceryl trinitrate. Then isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, erythritol tetranitrate, pentaerythritol tetranitrate, nitroglycerine, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate, erythritol tetranitrate, pentaerythritol tetranitrate. Organic nitrates are prodrug. Their active form is nitric oxide. Organic nitrates are prodrug. They release nitric oxide. They are mainly venodilators but also cause arteriolar dilation. Mainly venous venodilators होते हैं but arteries को भी dilate करते हैं and thus reduce both preload and afterload. So organic nitrate will reduce both preload and afterload. Let's see mechanism of action of nitrates. Nitrates are denitrated in the smooth muscle cells. Nitrates are denitrated in the smooth muscle cell and they release nitric oxide. Nitrates are denitrated in smooth muscle cells and release nitric oxide. Nitric oxide stimulates guanylyl cyclase. Nitric oxide stimulates guanylyl cyclase. It increases cyclic GMP, which leads to the dephosphorylation of myosin light chain kinase. Increased cyclic GMP leads to dephosphorylation of myosin light chain kinase. It leads to decrease in calcium concentration in the cytosol, which leads to relaxation of the vascular smooth muscle fibers. Nitrates are denitrated in the smooth muscle cell and they release nitric oxide. Nitric oxide stimulates guanylyl cyclase. This leads to increase in cyclic GMP. Increased cyclic GMP will cause dephosphorylation of myosin light chain kinase. Increased cyclic AMP causes dephosphorylation of myosin light chain kinase and it decreases the calcium concentration in the cytosol. Increased cyclic GMP leads to dephosphorylation of the myosin light chain kinase and it decreases the calcium concentration in the cytosol and thus leads to the relaxation of vascular smooth muscle fibers. क्योंकि मायोसिन लाइट चेन काइनेस का डिफॉस्फोराइलेशन हो रहा है और कैल्शियम का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है तो इट विल लीड टू द रिलैक्सेशन ऑफ द वैस्कुलर स्मूथ मसल फाइबर्स. Let's see the pharmacological action of nitrates. So nitroglycerine or glyceryl trinitrate is the prototype drug of organic nitrates. Nitrate has no direct action on heart. Nitroglycerine is the prototype. Nitrates have no direct action on the heart. Let's see their action on vascular smooth muscles. Nitroglycerine quickly relieves anginal pain by decreasing the oxygen requirement and increasing the oxygen delivery to the myocardium. So nitroglycerine क्या करता है? It decreases the oxygen requirement. मायोकार्डियम के ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को कम करता है और ऑक्सीजन डिलीवरी को इंक्रीज करता है. सो नाइट्रोग्लिसराइन it decreases the oxygen requirement of the myocardium, that is it decreases the oxygen demand and it increases the oxygen delivery to the ischemic area and thus relieves anginal pain. So nitrates have predominant venodilation effect. Venodilation is the predominant effect. Venodilation के कारण there is peripheral pooling of blood. This decreases the venous return to the heart, thus decreases preload. Venodilation के कारण peripheral pooling of the blood होता है, venous return to the heart will be reduced and thus
the preload is reduced. Left and right end diastolic ventricular volume is reduced. Left and right end diastolic ventricular volume is reduced. Cardiac work is reduced. And thus oxygen requirement of myocardium is reduced. Venodilation के कारण peripheral pooling of blood होता है. This decreases the venous return to the heart and thus results in decreased preload. Venodilation के कारण preload कम होता है and thus the end diastolic ventricular volume of both side is reduced. Left and right end diastolic ventricular volume is reduced. This reduces the cardiac work and this leads to the decreased oxygen requirement of the myocardium. Venodilation के कारण preload कम होगा, cardiac work कम होगा because left and right end diastolic ventricular volume कम होगा and thus oxygen demand will be reduced. Arteriolar dilation के कारण peripheral vascular resistance will be decreased, thus afterload is decreased. Okay. Arteriolar dilation के कारण peripheral vascular resistance is decreased and thus afterload is decreased. तो इसके कारण भी cardiac work कम होगा and thus oxygen requirement of myocardium is reduced. Venodilation के कारण preload कम होता है, cardiac work कम होगा इससे. Arteriolar dilation के कारण afterload कम होता है, इसके कारण भी cardiac work कम होगा and thus the oxygen demand is reduced. Or dilation of large coronary vessels and collateral vessels. Dilation of large coronary vessels and collateral vessels. This increases the blood flow to ischemic area due to redistribution of coronary blood flow. कोरोनरी वेसल्स और कोलैटरल वेसल्स के डायलेशन के कारण जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोरोनरी ब्लड फ्लो. कोरोनरी वेसल्स के डायलेशन के कारण कोरोनरी ब्लड फ्लो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है. दिस इंक्रीजेस द ऑक्सीजन डिलीवरी टू द इस्चमिक एरिया. ठीक है, और इसके कारण जो एंजाइनल पेन है उसमें रिलीफ होता है. तो वीनोडाइलेशन, आर्टेरियोलर डायलेशन और लार्ज कोरोनरी वेसल्स और कोलैटरल वेसल्स के डायलेशन के कारण आफ्टर लोड कम होगा, प्री लोड कम होगा, ऑक्सीजन डिलीवरी टू द इस्चमिक एरिया इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन डिमांड कम होगा एंड दस देयर विल बी रिलीफ इन एंजाइनल पेन. Action on other smooth muscles. Smooth muscles of the bronchi, esophagus, biliary tract are relaxed by nitrates. So bronchi, esophagus और biliary tracts के जो smooth muscles हैं वो भी relax हो जाते हैं. Pharmacokinetics. Organic nitrates are readily absorbed through the buccal mucous membrane, skin and gastrointestinal tract. So organic नाइट्रेट्स जो होते हैं वो बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन, नाइट्रेट्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से रीडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं. ऑल नाइट्रेट्स एक्सेप्ट आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट अंडरगो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हेंस ओरल अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रेट्स इज़ वेरी लो. ठीक है, आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट को छोड़ के जितने भी नाइट्रेट्स हैं दे हैव एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इसलिए उनका ओरल बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है. सबलिंगुअल रूट प्रोड्यूसेस रैपिड ऑनसेट इन 2 to 5 minutes. सबलिंगुअल रूट का रैपिड ऑनसेट होता है बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. ठीक है, एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन इज स्लो. सबलिंगुअल रूट रैपिड ऑनसेट बट शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. एब्जॉर्प्शन through skin is slow and hence transdermal route is used for prolonged इफ़ेक्ट. ठीक है, स्किन से जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है इसलिए दैट इज़ यूज फॉर प्रोलॉन्ग्ड यूज़. द मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड मेनली इन यूरिन एज ग्लूकोरोनाइड डेरिवेटिव्स. सो जो सबलिंगुअल रूट होता है उसका एक्शन बहुत रैपिड है 2 to 5 minutes में बट इट हैज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. Adverse effect. Adverse effect are due to extensive vasodilation. ठीक है, एक्सटेंसिव वैसोडाइलेशन के कारण हेडेक, पोस्चरल हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशन,
weakness, flushing and rarely syncope. So extensive vasodilation के कारण headache, flushing, postural hypotension, vasodilation के कारण postural hypotension, headache, tachycardia, palpitation, weakness, flushing and sometimes syncope can occur. To avoid these symptoms, the tablet may be spit out as soon as the pain is relieved. When the anginal pain is relieved, this should be spit out as soon as possible. Overdose may cause methemoglobinemia. ठीक है, ओवरडोज से methemoglobinemia हो सकता है. एडवर्स इफेक्ट में कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स आर headache, postural hypotension, tachycardia, palpitation, weakness, flushing and rarely syncope. Therapeutic uses of nitrates. First of all, angina में use होते हैं for acute attack of angina, for prophylaxis of angina. It is used for acute attack of angina, for prophylaxis of angina, in variant angina, that is Prince metal angina. angina के treatment और prophylaxis में variant angina में, that is Prince metal angina. Unstable angina में nitrates are used. MI में, CCF में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, बिलियरी कोलिक और साइनाइड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में. सो नाइट्रेट्स का क्या क्या यूज़ है एंजाइना में? अक्यूट अटैक ऑफ एंजाइना, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ एंजाइना, प्रिंस मेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, MI, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, biliary colic or cyanide poisoning. These are the therapeutic uses of nitrates. Angina, Prince metal angina, unstable angina, myocardial infarction, congestive cardiac failure, hypertensive emergency, biliary colic, and then the treatment of cyanide poisoning.